Hi everyone, welcome to today's video. So let me ask you a very interesting question that if you are looking to double your money, आपको दुगना करना है अपना पैसा, so where should you invest? Should you invest in a land, let's say in Marine Drive, एकदम prime property है and वहाँ पे आपको land मिल रहा है somehow. Should you put your money there or should you put it in the outskirts of the city where no growth is currently happening right now? बट हो सकता है आगे चल के ग्रोथ आ जाए, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट यू बाय द प्रॉपर्टी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. कोई सोच नहीं रहा है वहाँ पे कि ग्रोथ आएगी एंड सडनली ग्रोथ कम्स एंड your land prices appreciates by a lot and double हो गए. Now this is something that I have exhibited in the stock market also, in the real estate market also, and this basic concept is called as concept of flippening. This is a very powerful concept. So on this video I am going to help you understand this point by giving you multiple examples. So the first example that I would like to share with you is the story of Zomato. इसमें मैंने openly बहुत videos बनाए थे last year. I got a lot of public heat वगैरह वगैरह. Right now I am sitting on 100% gains on this stock. Now, why is it that I was able to make 100% returns on this? That is the most important part because I use the principle of flippening. So, flippening होता क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको आगे. The second stock where I was able to make really impressive gains, roughly around 400% gains I made. This was a lesser known stock called as Remedium Life Care Limited. And ये भी मैं आपको बताऊंगा कि why did I ended up purchasing it. So, just to help you understand the story, so I purchased this stock somewhere here, right around 45ish odd, and I was able to hold it and sell it somewhere around like 145ish, right? So उसके आसपास मैंने उसको बेचा था. अगेन आई एम लुकिंग टू बिल्ड सम पोजीशंस इन इट. अभी बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा दैट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, आपने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट. नाउ अगेन थर्ड एग्जांपल हियर इज ऑफ बिटकॉइन, राइट? नाउ बिटकॉइन इज अगेन एन एसेट वेयर आई वाज एबल टू 4x माई मनी. आई हैव स्पोकन मल्टीपल टाइम्स अबाउट इट. आई हैव रिटन मल्टीपल कम्युनिटी पोस्ट. मेरा मेंबरशिप कम्युनिटी भी चलती है जिसमें आई कीप ऑन डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स. सो बिटकॉइन ऑल्सो वॉज समथिंग दैट आई परचेज अराउंड 12 lakhs एंड राइट नाउ इट इज एट रफली 50 lakhs के आसपास, 55 lakhs के आसपास है, तो मोर देन 4x हो चुका है उसमें. सो द पॉइंट इज दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिपिंग इज एप्लीकेबल ऑन रियल एस्टेट, दिस इज एप्लीकेबल ऑन स्टॉक्स, दिस इज एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो करेंसीज. So on this video let me help you understand in a very systematic manner what this flippening is. बहुत ही simple आसान भाषा में बताऊंगा. You will enjoy it, right? And there are stocks in the market right now where this thing is currently going, okay? And we will use some examples. Please don't consider it as a buying decision. I will use the example of Remedium Life Care. I will use the example of Zomato. So these are some stock names that I will be taking. This is not a push that you go and buy all these assets वगैरह वगैरह. I am just helping you understand the concept. Now you guys go and apply. So okay, so number one, let us quickly discuss what is the exact meaning of flippening and exactly ये होती क्या है and क्यों होती है. So okay, so the concept of flippening is कि मान के चलो कि there is any asset, for example SBI cards हो गया या Remedium Life Care हो गया. So उसमें right now the situation is such कि there is a lot of negativity. जैसे SBI कार्ड का एग्जाम्पल आप उठाओ तो यार यहाँ से IPO हुआ था स्टॉक, पहुंच गया यहाँ पे, सो इट हैज़ बीन क्लोज टू 4 years, ऑलमोस्ट 0% गेन्स, राइट? सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दिस स्टॉक. यार ये तो स्टॉक फद्दू है, ये है वो है, फालतू का स्टॉक है, इट डज नॉट गिव एनी रिटर्न्स, दिस दैट. सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कम्युनिटी or at least trading community would not believe in these type of stocks, okay? So these are non-believers. And then there are 10% people like me who might be believing in this stock. मुझे लगता है कि यार फंडामेंटल्स मैंने पढ़े हैं, मार्केट मैंने पढ़ा है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छी इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह. सो ओवर टाइम इफ माई बेट इज राइट, राइट, सो मान के चलो कि दैट आई एम राइट अबाउट दिस थिंग, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस स्टॉक? एंड एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म प्ले आउट कैसे होगी? वेल इट विल प्ले आउट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में हम Q1 रिजल्ट्स आएंगे, Q2 रिजल्ट्स आएंगे, Q3 रिजल्ट्स आएंगे. अब मान के चलो SBI कार्ड्स इज पोस्टिंग बम्पर रिजल्ट्स, राइट? इट्स पोस्टिंग क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके. सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिपिंग? वेल अ लॉट ऑफ बिलीवर्स दे माइट इन Q1 माइट बी नेगेटिव अबाउट द स्टॉक. बाय Q2 यहाँ पे 80% लोग बचे, कुछ लोग फ्लिप कर गए, राइट? 10% यहाँ से फ्लिप कर गए, राइट? Q3 70% रहे, राइट? यहाँ पे 30% स्टार्टेड बिलीविंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एज मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम नॉन बिलीवर्स टू बिलीवर्स in that asset, the price of that asset will move up and it will move up substantially. So that is the concept of flippening. People keep on asking me that how do you identify multibaggers? भाई देखो multibaggers की कोई theory नहीं होती. Everyone gives their own logic of identifying multibaggers, but one of the core principles of identify multibagger is कि you have to first and foremost
pick something in the market that not too many people are choosing to believe right now. अब आप जाके फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, राइट नाउ HDFC बैंक इज अ प्रोवन एसेट, एशियन पेंट्स इज अ प्रोवन एसेट, नाउ यू हैव बजाज फाइनेंस विच इज अ प्रोवन एसेट. सो इसमें इट इज अनलाइकली दैट यू विल 4x योर मनी. यस, डबल हो सकता है डेफिनेटली, बट यू कांट कॉल दीज एज मल्टीबैगर स्टॉक्स. सो इफ यू आर लुकिंग टू फाइंड मल्टीबैगर stocks, then this concept of flippening should work. This has worked or is working right now on Zomato for me. This has worked for me on Remedium Life Care. This has worked for me on Bitcoin. So this concept of flippening is the core test or the core criteria of a stock becoming a multi-bagger. So I hope that the story so far is clear. अब मैं आपको बेसिक फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड थोड़े बहुत आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ. सो ओके, सो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है यार, फ्लिपिंग काम करनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर अ स्टॉक टू बिकम अ मल्टी-बैगर. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई शुड लुक एट व्हाइल एनालाइजिंग अ स्टॉक? ये फ्लिपिंग उसमें हो सकती है कि नहीं? सो देयर आर 5 की क्राइटेरियाज. नंबर 1 criteria is that this industry should be a high growth industry and there is a chance that that high growth industry will survive in India. जैसे मैं आपको रेमीडियम लाइफ केयर के एग्जांपल से बताता हूँ. रेमीडियम लाइफ केयर के बारे में आप जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग APIs. ना व्हाट आर APIs? APIs आर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. ये एक तरीके का रॉ मटेरियल होता है विच गोज इनटू मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन. जैसे कि आप फाइनल पायरे, जैसे कि आप क्रोसिन खाते हो व्हेन सम ऑफ अस फॉल सिक, सो वो क्या होता है? दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर ईटिंग. बट द टैबलेट दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, it has been manufactured by using what? APIs, active pharmaceutical ingredients. Now देखो, globally speaking, the growth of API industry is roughly around 8.5%. Okay, but in India that growth rate is projected to be somewhere around 13.5%. So ऐसा क्यों भाई कि इंडिया इसमें कुछ बहुत ही तुर्रम खा काम कर रहा है when it comes to API? Yes and no. Yes in the sense कि for example make in India की बहुत बात होती है, जैसे कि we'll manufacture like cars, this that. See, the manufacturing quality of cars in India is not that high, whether we like to admit it or not, right? Why? Because a lot of other countries are परफॉर्मिंग बेटर व्हेन इट कम्स टू द सोफिस्टिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप हुंडई या होंडा की कार्स देखो, सो दे हैव बेटर सोफिस्टिकेशन, सो टू से. सो दिस इज अ पॉइंट दैट आई होप दैट पीपल हु आर ड्राइविंग लाइक अ लॉट ऑफ इंडियन ब्रांड कार्स वर्सेज फॉरेन ब्रांड कार्स विल completely acknowledge. But when it comes to some other products, their make in India makes a lot more sense. So post 2020 COVID, when India started focusing on make in India, something like controlling the pharma supply chain became critical, not only for India but for countries all across the globe. When it comes to the final pharma products, right, जैसे कि for example बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि आप Pfizer को पकड़ो, right? So Pfizer sells you eventual drug, right? So that's a company that tests out a lot of medicines and they bring a drug to the market. So that's a finished product. Now Indian companies are not great when it comes to producing this finished product, but right now what is happening is that the API or the raw material for making those finished products, that space is gaining momentum in India. So if you are betting on some of the companies or pharma companies आपको लग रहा है, then API is a good area to at least start investigation. Why? Because the growth rate of the industry is high. So this is the first key criteria. Now this is the same lens through which you can judge something like Zomato कि भाई food industry की growth कहाँ हो रही है. This is the same lens through which you can judge Bitcoin. अब आप बोलो Bitcoin तो scam है, this or that. देखो यार, हर किसी का अपना अपना perspective है. I'm not trying to push you towards that asset class. आप analysis करके देख लो. But you have to identify at what rate the community of Bitcoin is growing. So this is the first key criteria in terms of identifying these type of flippening stocks. And the second key criteria of identifying a flippening stock is that it should currently be undergoing some problem because of which majority of the people are not trusting it. Again मैं आपको Remedium के example पे ले चलता हूँ. This stock was undergoing a lot of problems somewhere around 2021. अब ऐसा क्यों था? And अगर आप थोड़ा सा investigation करोगे तो you will come to realize कि Mr. Siddharth Shah resigned as MD on 20th May 2021. सो इनके मेन प्रमोटर थे एंड आपको ये इन्वेस्टर होल्डिंग पे भी पता चलेगा कि प्रमोटर्स कट देयर होल्डिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 35 क्लोज टू ऑलमोस्ट निल. ओके, आप देखोगे कि यार FII की भी कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक की बढ़ती चली जा रही है, आप डर जाओगे, राइट? सो दिस इज हाउ एन एवरेज पर्सन विल थिंक. दे विल नॉट इन्वेस्टिगेट बियॉन्ड दैट. अब आप देखो हुआ क्या, राइट, कि 2021 में, राइट, 2021 इज वेयर, राइट, समवेयर अराउंड ईयर, राइट, यहाँ के आसपास उनकी पूरी स्टेक होल्डिंग खत्म हो गई थी. एंड सिंस देन फ्रॉम 4 रुपीज़ ही सोल्ड इट एंड द स्टॉक वेंट टू ऑल द वे
to 160 रुपीज़। एक और फाइनल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जैसे सिद्धार्थ जी की होल्डिंग, राइट। तो आप देख सकते हो कि फाइनली इन्होंने अपनी होल्डिंग बेचनी शुरू करी होगी। द फाइनल सेल हैपेंड व्हेन ऑन 30th June 2021, ओके, एंड दिस इज 2021, सो दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ टर्मोइल वुड हैव हैपेंड विद द स्टॉक एंड कि यार प्रमोटर ने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए, दिस दैट, एंड बिग कि FI में प्रॉब्लम है, DI में प्रॉब्लम है, नो वन इज बाइंग इट, दिस दैट, एंड 3-3.5 रुपये 3-4 रुपीज़ पे दे सोल्ड इट एंड खत्म। अब भाई साहब दैट स्टॉक बिकेम लाइक वेंट टू ऑल द वे टू 162.59 रुपीज। ऑल्सो द ROCE and ROE of this stock is fairly high and it is one of the highest in all publicly listed companies. So how do we analyze this? So यार बेसिक चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी देखें आप, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल फाइन प्रमोटर सोल्ड इट, okay, why did the person sell it and who bought it? That's a very simple question to ask. So आपको पब्लिक टैब दिखेगी, सो पब्लिक टैब में आप जाके देखो, आपको पता चलेगा कि इनने 7.76% कंपनी है, 5.26 एक इंडिविजुअल के पास है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये यार नॉर्मल जनता तो है नहीं कि पीपल लाइक यू एंड मी आर गोइंग एंड बाइंग दीज कंपनीज लाइक 2% ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, वो हम तो नहीं कर रहे। देर आर सो मेनी बिग टिकट इन्वेस्टर्स, दे हैव बीन क्लब्ड एज पब्लिक। ना आप इसको नॉर्मल रिटेल बोलोगे, राइट। Yes, it is true that if retail participation is increasing like crazy on a particular stock and majority holding of retail becomes and promoters exist, this, that stuff, then maybe there is something fishy going on, so to say. But in this case, we cannot just simply tag or confuse public shareholding with just simply retail shareholding. So I hope that you got my point. You have to look at the final picture and वो problem समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रही है. If you identify the problem well, then you are able to investigate it. Again, I will encourage you to join my membership community. It's a very simple, thought-based community. You get to engage, interact with a lot of investors. You will learn a lot about investing fundamentally. सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी. You will learn a lot, enjoy a lot, interact with a lot of people. Try it for 2-3 months. See the results yourself. So anyways, back to the topic. The third key criteria of these type of flipping stocks should be that the fundamentals should be there. Now what is the meaning of fundamentals? यार बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एटलीस्ट या बिजनेस तो ग्रो करना चाहिए, राइट। कि फॉर एग्जांपल चलो यही एग्जांपल पकड़ लेते हैं, अभी खुला हुआ है तो, राइट। सो सी द रेवेन्यूज आर ग्रोइंग, राइट, प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, नो डाउट इट्स अ हाई रिस्क स्टॉक, 1200 करोड़ की कंपनी है, इट्स नॉट एज इफ दैट इट इज़ अ बिग कंपनी, इट इज़ मेकिंग सम स्ट्रेटेजिक मूव्स। कि इन्होंने कंपनी एक एक्वायर करी थी MVK लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। सो दे आर एक्सपैंडिंग इन देयर स्पेस थ्रू एक्विजिशन वगैरह, राइट, एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। जोमैटो को मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, राइट। सो जोमैटो अगेन यू विल सी कि कब जोमैटो की पिटाई कब हुई थी, राइट, यहाँ पे हुई थी बहुत तगड़ी पिटाई, राइट। कि यू कैन सी कि लास्ट ईयर बहुत पिटा ऐसा स्टॉक था, 51 रुपीज़ में मिल रहा था, राइट नाउ इट इज़ एट 190 रुपीज़, एब्सोल्यूट क्रेजी गेन्स ऑन जोमैटो। सो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट ग्रोथ हो रही थी बिजनेस में, राइट, इट वॉज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। नाउ इट हैज़ टर्न्ड प्रॉफिटेबल, ये देख लो 236, 138, मैंने एक स्टॉक नहीं बेचा है जोमैटो का, एंड नीदर डू आई प्लान टू सेल इट, आई एम गोइंग टू होल्ड माई पोजिशन फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। वेरी लाइकली इट विल गिव मल्टीबैगर रिटर्न्स टू मी, वाई, क्योंकि 250 रुपये का पनीर टिक्का और वॉटेवर लाइक कढ़ाई पनीर इज बीइंग सोल्ड एट 350 rupees on Zomato. People are buying it, right? And वो कन्वीनियंस ओवर एवरीथिंग वाला फंडा है, एंड इंडिया में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कॉल इट एथिकल अनएथिकल वॉट एवर इट इज़। एज अ शेयर होल्डर ऑफ जोमैटो यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी, एज अ कंज्यूमर ऑफ जोमैटो probably one could say that you will lose money. So anyways, I hope this example is clear. Now comes the fourth point, that the risk reward equation should be favorable. Now what is the meaning of risk reward equation being favorable? तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान के चलो there are two options, right? The first option is that you put 100 rupees. If you win, you will get 200 rupees. But if you lose, you are going to only, so यहाँ पे आपका 50 rupees का लॉस हो जाएगा. Now this is usually the casino option. Now if you go and do gambling in casino, this is usually how payoff matrix is decide for majority of the games. And here the payoff matrix is bad. Okay, अब मैं मैथ्स में नहीं जाता, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ. Now option 2 is that 100 rupees है. If you win, you are going to get 500 rupees. But if you lose, you are going to lose everything. Now if the probability of winning is 50-50 or 60-40 or 30-70, वो आपको मैथ थोड़ी बिठानी पड़ेगी. But in a 50-50 game, right, where your bet is likely to turn out right, then following this payoff matrix might make more sense. What I'm simply trying to tell you is that if you're looking for flipping options, जहाँ पे हो सकती है, you have to look for assets where the payoff matrix makes sense. अब इतनी मैथ तो लोगों को जनरली आती नहीं है, और मैथ यहाँ पे पढ़ाना मैं बैठे भी नहीं हूँ. आप क्लास 11-12 की बुक पढ़ लेना, probability पढ़ लेना, you guys will understand it more. But net, what I'm trying to tell you is that usually, let's work with the example of Bitcoin. Now Bitcoin is $1 million
bet कि अभी for example 60 लाख रुपए पे चल रहा है, that it will go to 8 or 9 crores per Bitcoin easily if the community flips. For example, stock market के जो लोग हैं participants who have never believed in Bitcoin, even 30-40% of that community starts believing in Bitcoin eventually, what do you think is going to happen on Bitcoin? Well, that community is very tiny right now. It will grow like anything. So that is going to happen on Bitcoin in case that bet turns out right. So Bitcoin is either a $1 million bet or a $0 bet. Now $0 bet means कि जहाँ पे है अभी Bitcoin, it will something weird will happen and it will go to zero. So does the payoff matrix make sense? Now I will leave it up to your judgment whether you should be putting money, not putting money, all that. Then comes the final point that the asset should not have major red flag. For example, जैसे कि Zomato के केस में what was the red flag? The red flag was that it's not a profitable company. So just analyze that, hey, can it become profitable? Similarly, Remedium के केस में what was the issue? The Remedium के केस में issue ये था कि promoter has sold his holding. भाई okay, promoter ने holding बेच दी, but he sold it when the stock was trading at 4 rupees. उसके बाद तो बढ़ गया ना. Now investigate why did it go up, right? So this is an analysis that you will have to do. Now Bitcoin के केस में क्या है आप मेरे को बता दो comment में लिख के. I will not spell it out for you. But no red flag should be there, or the problem that has happened you need to investigate and get to the right answer. Okay, so I hope that you got the concept of flipning and how to apply it. Now final points that you need to keep in mind. Let's see, flipning are high risk bets. It's not as if कि अपना घर बेच दूंगा मैं, right? And I'll put all my money on Bitcoin, or I'll put all my money on Remedium, or I'll put all my money on Zomato. नहीं भाई साहब ऐसा मत करना. Anything can happen on any asset, any stock. We don't know the full picture. We work with whatever information is publicly available. So always invest within your limit. For high risk bets, I would say that if you're a beginner, start with 5 to 10% of your portfolio. Now if you are an intermediate player, then you can have maybe like 20-25% risk exposure. It also depends on your age, what other investments you have, what portfolio you currently have, what is the size of the portfolio. हजार different चीजें हैं. Please go and watch this video, how to design a portfolio. You will get a better understanding. This is the second key point that you should remember. Third key point is around hedging. Hedging का concept आपको पता होना चाहिए. For example, in case of Remedium, when the stock gave me roughly 2x gains, I sold 20% of my positions. Why? Because it was a high risk stock. So I had to cut my positions to build a cushion, so to say. So these are some of the hedging techniques that you need to understand. So इन तीनों चीज़ों का combination बिठाओ and start identifying some flipping bets. And this is a bullish market. And if you are able to identify some of these bets, then there is a very good chance that you are going to benefit a lot from this ongoing current bull run. I hope that you enjoyed this conversation. If you did, do press the like button and I'll see you soon.